जो थोड़ा लेफ्ट ओवर टॉपिक था वो हम फिनिश करेंगे और उसके बाद हम करेंगे आज न्यूक्लियर रिएक्शंस. वी विल ट्राई टू स्टार्ट if time permits, and we have a tutorial class also. You have certain questions, I think 4 questions for beta and gamma, and 2 questions you are left with the alpha decay. Okay. Okay, so today I have shared the PDF only, which you have already in your hand, and the topic which we have to, let me just adjust the page view. Okay, so page number 88, 87. Okay, this was angular momentum conservation. Okay. We have done the angular momentum conservation in beta decay and alpha decay also. That angular momentum has to be conserved, and according to that, the parity has to be conserved. In most of the reactions, the angular momentum is conserved and parity is also conserved. And linear momentum and energy is there, which is also a conservation, but we don't do in that detail because that is not required for any reaction. To study the outcome of the reaction, means outcome of the decay process. तो वहाँ पे हम एनर्जी वाला पार्ट और थोड़ा सा लीनियर मोमेंटम को अवॉइड करते हैं, बिकॉज वी डोंट केयर कि वे डॉटर न्यूक्लियर अगर जनरेट हो रहा है तो वेयर इट इज गोइंग इन द सैंपल, वी डोंट केयर, बट व्हाट इज कमिंग आउट वी वांट टू नो what is the angular momentum of that. But for daughter nuclei, we want to know what is the leftover angular momentum with the daughter nuclei. If initially you have this much, so you can easily calculate the states of the daughter nuclei also. एनर्जी और लीनियर मोमेंटम हम जब कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूज करेंगे उसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस में दे वी विल यूज दोस टू थिंग्स, but also they are not in very detail, but we get certain things from those two conservation law. So linear parity is one of the basic conservation law for most of the nuclear reactions. But in some cases of nuclear reaction, we have a parity violation. Parity is not conserved. And you will see, I think we don't have the topic, but in particle physics, we will see somewhere the parity is not conserved. And if parity is not conserved, then what kind of reaction is that? It is a strong reaction, weak reaction, electromagnetic, or what kind of reaction? So that we will discuss where the parity is not conserved. Parity has to change. Okay. So in this case also we have the angular momentum in the alpha, sorry, gamma is coming out. The gamma is radiation, and last time we have talked कि gamma के पास momentum भी होता है और precisely angular momentum भी होता है, even though that is a massless particle at rest. वो मतलब उसके पास कोई mass नहीं होता है when it is at rest, but still when it is moving, when the photon is moving or the wave is there, means electromagnetic wave, you have certain angular momentum related to that, and you can easily find there could be an experiment in which if you bombard a photon, several photon on certain system which is very light, it will start rotating. You can have that experiment, but it is not feasible to do. It is very difficult to do. But we can have a system in which if you bombard a photon of a certain given angular momentum,
in a particular direction only, means it should be polarized. So if it is polarized, so the it will try to rotate the thing on which it is being bombarded. So the angular momentum, which can be given in the unit of h bar in quantum mechanics, that is 1, 2, 3, 4. These are the quantum numbers. When you multiply with this, you get the value of angular momentum. And this one is, let me just take the color pen also. So this is your initial I. I is the total angular momentum of the nucleus, which is going to have a gamma decay. So I is likhte hain usse I, that is initial, and this is your L plus IF. L is the angular momentum concerned with the electromagnetic radiation, and this is not a small L, this is a capital L. And why it is capital L, we have already done about the multipole moments in the first unit. If you remember, अगर हो सकता है, अगर ध्यान हो तो मल्टीपोल मोमेंट्स हमने किया था जिसमें मोनोपोल, क्वाड्रपोल, डाइपोल, ऑक्टोपोल ये सारे मोमेंट्स आए थे. And we have also seen कि monopole and quadrupole for electrical it is there for a nucleus, and dipole and octopole is there for the magnetic kind of thing. So means the multiple moments have a different character for different values. So L will be different. So this is your initial total angular momentum of the nucleus and this is your final. तो जब अब एक बार गामा डी के एमिट हो गया तो आपके पास न्यूक्लियस है and it emits a gamma decay, and this is your I and this is your I, and this will be having a L as a multiple moment angular momentum. So L will be equal to either this one, means obviously the angular momentum can add in both ways. It is quantum mechanics, it is not a classical mechanics. So it can be I1 plus IF or it can be I1 minus IF, anything. Means if you have a number say 3 by 2 and say 5 by 2, so it can be equal to how much? It is 8 by 2, that is 4, and I minus I means 5 by 2 minus 5 by, sorry, 3 by 2 and 5 by 2, that will be 5 minus 2 is 2, 2 by 2, that is 1. So any number, it can be any number, means it can be 1, 2, 3 and 4, any number from this, any particular selection. So how they are adding up, that is once you find this number, that is what is the value of capital A, then you can say they have arranged in this way. Okay, now the parity. Delta pi means change in parity. If there is no change in parity, then the radiation field is even parity. We will see what is the even parity. Even parity radiation क्या होते हैं वो भी अभी देख लेते हैं, बहुत surface पे जाएंगे बहुत डिटेल में नहीं. There is a derivation for this also. And delta pi is if there is a change in parity, means somehow if the reaction happens and the parity of initial and final changes, it means some parity is there for the this one, means total parity must be conserved. So we are writing this delta pi with respect to initial and final state. So if there is a change, then this parity should be odd parity. ठीक है. उसके बाद अगर ध्यान होगा, मैं बस इक्वेशन लिख रहा हूँ, अगर याद हो तो देखना, नहीं याद हो तो भूल जाना. अगर फर्स्ट यूनिट रिवाइज करोगे तब याद आएगा. This is concerned with the electrical and this is concerned with the magnetic. मैग्नेटिक में मल्टीपल मोमेंट्स की जो पैरिटी है वो -1 टू द पावर ऑफ कैपिटल एल, एंड मैग्नेटिक केस के लिए -1 टू द पावर ऑफ एल प्लस 1. न्यूक्लियस के लिए दोनों पॉसिबल है. You have charge and charge is moving. So when the charge is there, if charge is producing electric field, vibration of charge is there, and there is a disproportionate arrangement of the charge, then you will have a electric character kind of thing in the electromagnetic wave. Means that is due to the electrical variation. And obviously the electromagnetic wave will, whenever you have electrical variation with time or space, you will have a magnetic variation. But the what it has produced means what is the source. So that source is electrical character. So that is and its moment, or you can say parity of that particular character is given by this particular formula. And if you have charges and they are moving, and when the current is varying with time or space within the nucleus, so that will produce a radiation that will be electromagnetic radiation, but the source is magnetic kind of character. Means that is due to the current. Previous में क्या था, due to the charge, and दूसरे में क्या है, due to the
करंट। तो जब भी करंट से अगर कोई आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट हो रहा है, so you will say that is a magnetic kind of magnetic source is there, and whenever there is a production due to the charge variation, then you can say that is due to the electrical source is there somewhere which is varying with the time. Okay, so if delta pi is no change, means if it is not changing, the radiation field will be a even parity. इवन पैरिटी का मीनिंग ये नहीं कि वो इलेक्ट्रिकली होगा या मैग्नेटिक ही होगा, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। नाउ द इक्वेशन, अब इस इक्वेशन को ध्यान रखो, आपका नो चेंज है, इट मींस दिस शुड बी 1, सो इवन एंड इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला क्या है, -1 टू द पावर ऑफ कैपिटल एल, यानी एल की वैल्यू अगर इवन होगी तभी ये वैल्यू 1 आएगी। इट मींस if there is a no change, then the radiation could be due to a multipole moment which is in even parity kind of thing, means आपका मोनोपोल हो गया, आपका क्वाड्रापोल हो गया, या उससे ऊपर चले आओ, ये दो पे फोकस करते हैं, मोनोपोल एंड क्वाड्रापोल, they give a even kind of parity for a multipole moments, electromagnetic multipole moment. So it will be electrical in nature and the number will be even. The number will be even for L. There could be odd also. Means odd का क्या केस है, मैग्नेटिक का क्या केस है, अगर L की वैल्यू इवन है, इवन प्लस 1 will become odd, और L की वैल्यू अगर odd है तो odd number plus 1 will become even. So again there is a no parity change. It means मैग्नेटिक कैरेक्टर का भी हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर डेल्टा पाई 0 होता है, नो चेंज होता है तो, बट मैग्नेटिक मोनोपोल जो मल्टीपल मूवमेंट्स होंगे दैट विल बी ऑफ ऑड नंबर। इट मींस मैग्नेटिक आपको कौन सा एग्जिस्ट करेगा, डाइपोल करेगा या ऑक्टोपोल करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कौन सा होगा, आपका मोनोपोल होगा, ड्यू टू द मोनोपोल वेरिएशन द रेडिएशन इज जनरेटिंग, बट मोनोपोल से रेडिएशन जनरेट नहीं होता है, उसको मैंने नीचे एक लाइन में लिखा है, बट तो उतना याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज चार्ज विद इन द एनी स्फीयर, इफ यू वेरी द चार्ज, मींस इफ चार्ज इज वेरी विद इन द स्फीयर with time or space, then it is not going to produce any variation of the electric field outside that sphere. इसको सोचना है एक बार कि अगर एक स्फीयर है हमारे पास और उस स्फीयर में हमारे पास चार्जेस है, वो चार्जेस अपने प्लेस को चेंज कर रहे हैं, दे आर मैनेजिंग देयर प्लेस इनसाइड, तो टाइम के साथ अंदर ही वेरी कर रहे हैं, स्पेस के साथ वेरी कर रहे हैं, विल दे प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिक वेव, दैट इज नॉट पॉसिबल, because outside this sphere always what we look in the sphere is total charge Q, तो कभी चेंज ही नहीं हो रहा है, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए कि अरेंजमेंट इनका कुछ परफेक्ट होना चाहिए, मीन इट मस्ट बी अरेंज इन दिस वे, यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाए, यहाँ पे ज्यादा हो जाए और यहाँ पे वेरिएशन फिर हो जाए, तब वो इलेक्ट्रॉनिक वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट इफ यू हैव अ चार्ज एंड ऑल द चार्जेस आर वेरिंग विद टाइम एंड स्पेस, the total charge is always Q when you see from the outside, so that is not going to produce any electromagnetic wave. If delta pi changes, अगर आपका L का वैल्यू ऐसा आता है जिससे कि डेल्टा पाई चेंज हो रहा है, then radiation will be of odd parity. Odd parity का मीनिंग क्या है, L equal to 1, then this -1 to the power of 1 will give me minus, odd will be electric. जो भी रेडिएशन जनरेट होगा अगर वो ऑड नंबर आता है यानी डेल्टा पाई चेंज हो रहा है और यस है और एंगुलर मोमेंटम 1 आता है तो इट मस्ट बी इलेक्ट्रिकल इन नेचर, और एंगुलर मोमेंटम कैपिटल L की वैल्यू अगर इवन आती है देन इट विल बी मैग्नेटिक, बिकॉज़ अगर चेक करते हो even number plus 1 that become odd, odd means requirement of parity change, तो ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज है, आपको याद करना पड़ेगा, और इस पे क्वेश्चंस तो एक आधा आ सकते हैं, 2 नंबर 3 नंबर के आ सकते हैं। if parity does not change then what is the nature of or what is the source of the electromagnetic wave or gamma radiation which is generated from the nucleus, so you can easily say if delta pi is not changing, if it is an electrical source then it will be having an even L value, if it is a magnetic then it will be having a odd L value, means odd L का मीन कहने का मीनिंग है मल्टीपोल मोमेंट किस पैरिटी का है, तो L जो है ना वो मल्टीपोल मोमेंट का पैरिटी शो करता है। चलो यहाँ तक इसको खत्म करते हैं, ये मैंने 1 के लिए भी लिख दिया है कि L equal to 0 के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर हमने इंटरनल कन्वर्जन का शायद डेरिवेशन लास्ट टाइम कर ही लिया था, ज्यादा कुछ था नहीं, दिस इज द मेन फार्मूला व्हिच इज हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज देयर व्हेन इट इज बीइंग emitted from the orbit due to this multiple interaction of nucleus with the orbital electrons, ये हमने कर लिया था। this graph is also shown to you, this example is also shown to you, एक मैंने कैलकुलेशन कर लिया, बाकी मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, हमने क्लास में कर लिया था। these all are minus and you have to take always the magnitude, माइनस नहीं लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, लास्ट टाइम हमने किया हुआ है। okay, the one thing which in this which we are left with is the
there are two different mode of decay. Last time we discussed किया था ना, if A is the nucleus and that is decaying into two different mode. One mode is having lambda 1, one mode is having lambda 2. Then the total lambda will be lambda 1 plus lambda 2. ठीक है, आपके दोनों जो लैम्डा होंगे वो एक्चुअल लैम्डा को डिसाइड करेगा कि आपका न्यूक्लियस बहुत सारे हैं, सैंपल है आपके पास, तो जो सैंपल का जो लैम्डा होगा दैट विल बी sum of individual lambda. Obviously the gamma and the electron conversion means the electron which is coming out, they are competing process. Whenever there is a excitation of a nucleus, these two are competing. So ये होगा या ये होगा, ये होगा, मतलब they are deciding. और जिसमें ज्यादा मेहनत कम लगेगी वही काम होगा, obviously. जिसमें हम मेहनत कम चाहते हैं, जिसमें एनर्जी वेस्टेज कम होगा, या जिसमें आप ज्यादा स्टेबल हो जाओगे, you will try to do that. The nucleus also doing that way. जिसमें हमारे पास एनर्जी भी we have to waste less and we get stable. So if it, either it will follow electron emission or it will follow gamma, internal conversion or gamma. दोनों process हमारे पास लेके चलना. तो there is a number which is defined which is called as alpha, and alpha is not alpha decay. ध्यान रखना ये alpha decay नहीं है. Alpha is internal conversion coefficient. Means what is the probability of getting an electron to be emitted instead of doing a gamma. तो दोनों के लैम्डा को जब रेशियो निकालते हो तो ये एक तरीके से प्रोबेबिलिटी है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? लैम्डा इज नथिंग बट इट इज रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी. हमने पहले कर लिया, अल्फा वाला में बड़े डिटेल में किया था. ट्रांसमिशन लैम्डा इक्वल टू, ये फॉर्मूला अगर याद होगा, लैम्डा इज f into t, transmission coefficient, and this is the frequency, how many times it is being done. So this is the transmission coefficient, this is the frequency. So the lambda is related to the probability. So if you compare these two, means what is the probability of going into internal conversion rather than a gamma decay? If you have any multiple variation or multiple changes within your nucleus, तो जब भी nucleus अगर recycled state में होगा तो दोनों में से कौन सा पॉजिटिव होगा? तो this ratio is called as alpha. Alpha is internal conversion coefficient. Then lambda total will be lambda L, lambda gamma and lambda I. तो दोनों को ऐड कर दिया, दोनों से हमने पुल आउट कर लिया तो अल्फा आ गया. बस यहाँ पे मैं लिखा था, इक्वेशन हमने खुद से डिफाइन किया. If you pull out lambda and gamma, and this is a disintegration constant for gamma decay, then it is 1 plus alpha. And alpha will have different component because that is not a one number. If the electron from 1s is being emitted, it will have a different alpha, means different lambda. If it is emitted from 2p, it will have different. If it is emitted from 2s, it will be different. If it is emitted from 3s, 3p, 3d and so on. So this will have several different alpha also. यानी alpha कोई एक नंबर नहीं है, alpha भी different. यानी सबसे लोएस्ट ऑर्बिट से अगर एमिट होता है तो उसकी डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट डिफरेंट होगी. अगर वो दूसरे ऑर्बिट से एमिट होता है तो उसकी डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होगी, बिकॉज़ दैट विल बी वेरी, बिकॉज़ एनर्जी इज वेरी. तो अभी मैंने एग्जांपल दिया ना कि एनर्जी आपका स्टेबल होने के लिए कितनी एनर्जी आपको इन्वेस्ट करनी है, दैट इज योर कैलकुलेशन. यू डोंट वांट टू वेस्ट मोर एनर्जी, यू वांट टू कीप योर एनर्जी विद योरसेल्फ. सो दिस न्यूक्लियस आल्सो डूइंग द सेम वे. तो हो सकता है कभी वो के को एमिट कर दे, कभी एल वाले को कर दे, कभी एम वाले को कर दे. एल में भी आपके पास तीन ऑप्शन हो जाते हैं, yes वाले, ये p वाले, फिर m होता है, m में भी आपके पास ऑप्शन है. So there are some variation that has been studied. एग्जाम में आ सकता है कि how the alpha, which is internal conversion coefficient, varies with certain factor. So that is here. It varies. It is proportional to z cube. As the number of electron increases in your atom, there is a more chance of internal conversion rather than your gamma decay. As इलेक्ट्रॉन नंबर इंक्रीजेस, z क्यूब मींस इलेक्ट्रॉन नंबर ही इंक्रीज हो रहा है, z इंक्रीज होगा तो क्यूबिक फैक्टर में वेरी करता है. तो इफ इट इज z इज इंक्रीजिंग, इट मींस it is a more chance of having an internal conversion rather than your gamma decay. Okay, the decrease rapidly with increasing the transition energy. Means आप किस स्टेट से किस स्टेट में जंप कर रहे हो. फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज, these are the energy state, this is the ground state, and this is first, second, third, fourth and fifth, then this will follow electron conversion. That rapidly decreases with increasing transition. This may also follow electron conversion, but this may follow a gamma. This may follow a gamma. This may follow a gamma. This is what. If you are at the higher energy level, if you drop back to the ground state, the nucleus will more having a tendency to emit gamma rather than
electron conversion. But if you're at the first or second eccentric state, then there is a more probability that you can emit an electron. And these electrons are orbiting electron, existing electron, already there, they're not produced from somewhere. जैसे बीटा डीके में होता है, तो बीटा डीके से थोड़ा सा कंफ्यूज होता है ना कि इंटरनल कन्वर्जन में भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, बीटा में भी एमिट हो रहा है, तो दोनों का अलग नाम क्यों दे रहे हैं? Both are different. Beta में इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, it is being produced within the nucleus, and आपके internal conversion में it is already there, pre-existing electron is being emitted. They increase rapidly as multiple order increases. Means electron conversion will be more for quadrupole movement, octopole movement, and it will be less probable if you are in the monopole or dipole kind of case. As the L increases, there is a more chance of having an electron conversion. The alpha for a higher atomic shell means K, L, M, and so on decreases like 1 by n cube. So as you go for a higher orbit, it is less likely because obviously the multiple moments when it get excited means it is varying within the nucleus. If it is there in the nucleus, then it will that multiple moment field. आपको अगर ध्यान होगा तो 1 by r square आपका मानो इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन होता है ना, या मैग्नेटिक फील्ड भी जो वेरी होता है 1 upon r square से वेरी होता है. मोनोपोल डाइपोल का वेरिएशन क्या होता है? 1 upon r square, r cube, r5, r6, r4, r3 क्या लिखेंगे? How does the electric field or magnetic field varies for a dipole case? And then quadrupole case. डाइपोल के लिए बता दो, डाइपोल तो न्यूक्लियस से कोई रिलेशन नहीं है, डाइपोल है, डाइपोल तो आपने पढ़ा हुआ है. हाउ डज द फील्ड वेरी एज यू गो अवे फ्रॉम द डाइपोल? 1 by r से वेरी करता है, 1 by r स्क्वायर से वेरी करता है, या 1 by r क्यूब से वेरी करता है, या 1 by r 4 से वेरी करता है. कैसे वेरी करता है? डाइपोल मोमेंट है ना, दो चार्जेस होते हैं ना, प्लस and minus, and there is a 2d distance, and you are here. Then how this electric field is proportional to 1 upon means upon distance. There is a distance from the center. क्या होता है ये फंक्शन? कैसा होता है? 1 upon r होता है, 1 upon r square होता है, 1 upon r cube होता है, क्या होता है? Then we can understand the fourth statement easily. r cube. हाँ, क्या होता है? They're inversely proportional to r cube dipole moment. R cube and r4 for quadrupole. It means as you go away from the nucleus, these multiple moment effect is going to decrease. They are going to decrease. 1 upon r square ज्यादा दूर तक जाएगा. इस फंक्शन को प्लॉट भी करते हो तो 1 upon r square अगर ऐसा दिख रहा है तो 1 upon r cube will be something like this. 1 upon r4 will be something. Means they will going to decrease at a faster rate as your multiple moment is going to increase. Octopole में और 1 upon r5 हो जाएगा and so on. So as means as you go on the higher state, अगर आपका इलेक्ट्रॉन k shell l या m या ऊपर चलता जाता है तो till that distance your multiple moment has no effect. So it will happen only for k, l or m shell. It is not going to happen for more than that. तो जो nearest आपके इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स हैं उन्हीं को इफेक्ट करेगा, because field is going to decrease drastically very fast as you move away from the nuclear radius. ये फील्ड जैसे जैसे आप मोनोपोल बढ़ता जाता है आपका, मतलब आपका मल्टीपल मोमेंट्स बढ़ता जाता है, पहले मोनो है, डाई है, क्वाड्रा है, ऑक्टा है, and it goes on increasing. The rate is very fast. 1 upon r square, 1 upon r cube, 1 upon r4, and 1 upon r5, and 1 upon r6, and so on. So they are not going to affect. Means higher orbit में अगर electrons हैं कोई यानी away from the nucleus, they don't have any effect from the nucleus. They are free from the nucleus. So only the inner shell, means inner orbit, is going to have these kind of effect, and they will emit their electrons. They will interact as a in the form of an internal conversion. Okay, so ये टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं. इसके ऊपर देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास जो ट्यूब में करने होंगे. So let me just share the
nuclear reactions, which is we are going to start today. Nuclear reaction, let me just share the page to you. तो आज मैं लिखने से ज्यादा आपके पास PDF रहेगा, उसी में मैं आपके notations change करके I will do that. Let me just check which page I have to open. That is 90. Okay. Okay, so this is a bit blur, I think. और एक मिनट रुको, इसका पेज व्यू जरा चेंज करूं. पेज व्यू नहीं आ रहा है इसमें. If I can write, yes. Okay. अभी थोड़ा सा आपको स्ट्रेन हो सकता है आंखों पे, but it is looking good in the mobile. कंप्यूटर में मुझे थोड़ा सा expanded दिख रहा है, but it is. Well, let me just make it small. Okay. So this is a typical nuclear reaction. So we are starting a new unit actually, the nuclear reactions, and this is a typical reaction which we can easily write in the form. जैसे हम normally chemical reaction लिखते हैं, उसी तरीके से हमने nuclear reaction भी लिखा है. कोई ज़्यादा फर्क नहीं है. A particle is there. Okay, let me change the color. ये visible नहीं होता. A particle is there, and you have the X, which is as a target. So you bombard a projectile. Normally, this is a very light particle. It could be alpha particle, it could be a light nuclei, it could be electron, it could be a neutron, it could be a proton, even it could be a gamma. So this is a very light nuclei. Or it can be any projectile, which is here it is accelerated projectile, which we are bombarding on a target. हमारे पास एक target है, sheet है, और उस sheet में we have atoms, और atoms के अंदर भी we have a nucleus. So we don't have a free nucleus anyway. हमेशा हमें atom ही लेना पड़ता है और atom से ही study करना होता है. atom को आप जब energy एक increase करोगे तो it will penetrate the atom, it will go to the nucleus. So this is your target. Solid target हो सकता है, liquid target हो सकता है, gaseous target हो सकता है, it can be anything. Then you have a reaction, and after that reaction the X has been converted into Y. कुछ reaction हुआ दोनों के बीच में, nuclear reactions हुए, not a chemical reaction, it is a nuclear reactions. means electron का कोई यहाँ role नहीं है, proton neutron का role है. So something which has happened within the nucleus. So that has converted into a Y, and it could emit another particle which is normally called as outgoing particle, which is a very light nuclei. It could be a gamma photon, it could be a proton, it could be a neutron, it could be any thing which is being produced by the nucleus. So this is the outgoing particle, this is the incoming particle, and this is a target, and this is the result of the target which has been converted to a Y nuclei. So I have written everything. Normally we consider target, usually that is a stationary in the lab. Y will be a heavy product that stops within the target. तो target के अंदर ही वो रह जाता है और वो वहीं पे रहता है, कोई बाहर नहीं आता है. And it is not being observed. इसको हम कहीं measure नहीं करते हैं. हमारे पास जो nuclear reactions का chamber होता है, जिसके अंदर हमने nuclear reaction करना है, इसके बाहर जो detector लगे हुए हैं, यानी there is a detectors placed outside this.
So they will detect only B particle. उनके पास क्या जाएगा? B particle जाएगा. X और Y will remain within the target only. X BC के अंदर ही है और Y BC के अंदर ही है. And A is being bombarded, having a good amount of flux. So this is a general setup of the size is not more than 10 centimeter. बहुत AV बहुत ज़्यादा है, इससे भी कम होता है. The chamber is very small where the nuclear reaction happens. 10 centimeter से कम means in range of centimeter ही होता है, बहुत ज़्यादा नहीं. Okay. So outgoing particle is also light particle and that can be detected and measured. उसकी energy measure कर सकते हो, उसका polarization measure कर सकते हो, angular momentum, maximum characteristic which you can measure from those outgoing particle, and you can predict कि A तो आपको पता ही था, आपने क्या रखा था, A का तो आपने सारा आपने डिसाइड किया कि किस न्यूक्लियस से या किस पार्टिकल से मुझे बम्बार्ड करना है. दैट इज योर डिसीजन एंड टारगेट यू हैव चोजन, मुझे ये टारगेट पे इसको बम्बार्ड करना है. एंड बी की मेजरमेंट आपने सारी चीजें कर ली. इट मींस यू कैन प्रेडिक्ट व्हाट इज वाई. तो वाई क्या जनरेट हुआ विद इन द टारगेट, यू कैन इजीली प्रेडिक्ट दोस थिंग्स. ओके, देन हाउ वी क्लासिफाई द न्यूक्लियर रिएक्शंस. ये तो हो गया कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है. एक और चीज थी ये, दिस इज द शॉर्टकट हाउ वी राइट द न्यूक्लियर रिएक्शंस. तो जब भी बुक में ये मिलेगा ना, तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियर रिएक्शन का मीनिंग है मींस A is the projectile, X is the target, B is the outgoing particle, and Y is the whatever the target which has converted into Y. So this is a product after the nuclear reaction. So this is a shorthand writing of a nuclear reaction. ना A plus B plus C plus लिखने की जरूरत नहीं है, इस form में भी लिख सकते हैं. And if somehow if we have two particles which is coming out, so we can write B and C and Y. It means B and C is coming out. A is the projectile. So you can write in this format also. तो हम देखेंगे बाद में कि और क्या different format हो सकते हैं. But how we classify, कि हम nuclear reactions को classify कैसे करें? Means there should be some kind of category. और exam में हमेशा आता है define direct reaction, define transfer reaction, define what do you understand by any radiative reaction or radiative capture or photoelectric. This kind of thing is there. Exam में 1 2 नंबर 3 नंबर हो सकते हैं, 5 नंबर में भी एक्सप्लेन करने को आ जाता है. Classification of nuclear reactions. So the first thing is if B, which is the outgoing particle, if it is a gamma ray, अगर outgoing particle मेरा gamma particle है, then that reaction is called radiative capture. Capture नहीं किया, इसने emit किया है, but it is called as radiative capture. So whenever means actually what you have captured, ये इस सेंस में कह रहे हैं कि आपने कैप्चर क्या किया है, आपने अपने डिटेक्टर में क्या कैप्चर किया है, तो that is your radiation. So that is why it is called as radiative capture. So the first classification, if B is your gamma ray, then it is called radiative capture. If A is gamma ray, आपने जो बम्बार्ड किया है, यानी जो स्टार्टिंग में आपने प्रोजेक्टाइल यूज किया है, वो प्रोजेक्टाइल कोई पार्टिकल नहीं है, वो गामा रेडिएशन है, गामा पार्टिकल्स. इफ यू यूज दैट एज ए, then that is called as nuclear photoelectric effect. जैसे हम नॉर्मली मेटल केस में भी कहते हैं photoelectric effect. So that is same sense. You bombard a photon and you see what is going to happen. So this is called nuclear photoelectric or photo effect कहते हैं. Electric तो word use नहीं है, photo effect. Okay. Then you have if A and B and X and Y after the reaction it is same and it's called as scattering. सबसे पहले तो इस कैटेगरी को हम scattering process कहते हैं कि अगर A हमारा मींस सब रिएक्शन अगर ऐसे लिखें A plus X is equal to X plus A. This is the reaction. Before the reaction they are A and X, after the reaction they are again A and X. So these are called scattering. Rutherford scattering is this kind of reaction. तो Rutherford को कहाँ classify करोगे, इस point में classify करोगे. So if it is the things remain same, it means nucleus to nucleus interaction नहीं हुआ है, but nucleus के किसी force का interaction हुआ है या उसके there is no direct interaction between both the nucleus. Means ये आपका एक nucleus छोटा है, small lighter nucleus है, ये heavy nucleus. दोनों के nucleus ने आपस में directly interact नहीं किया. They have interacted through field
from the nucleus only, not from the atom. So feed from the nucleus. So in that case, most of the time you are left with the same product and same outgoing particle. Outgoing particle भी same होता है, product भी आपका same होता है. They are called scattering process. They can be classified into two different ways. First, if B and Y in the ground state, then it is called elastic scattering. अगर आपका B और मैं B और Y लिख रहा हूँ, but B यहाँ पे A है और Y भी अपना X है, so they are the same thing. So if they remain into their ground state even after the reaction, even after the scattering, then they are called as elastic scattering. And Rutherford interaction, Rutherford nuclear reaction is a scattering process. It is scattering and it is rather elastic scattering. There is no change in the energy before and after the reaction. तो वो भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन ही है. रदरफोर्ड इंटरेक्शन को अगर स्कैटरिंग को पढ़ते हैं तो उसको हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग के नाम से फेमस है, बट दैट इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन. Okay. In other cases, what can happen, that leftover particle, that is leftover A or leftover X, either of them or both of them are left into the excited state. It means some energy of projectile has been dumped here. तो कुछ एनर्जी इसने इस X को या इस A को यानी आउटगोइंग पार्टिकल को या इसको दे दिया. तो इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन will jump into the higher orbit. So that will be in the excited state. So that is called as inelastic. The energy has been transferred, but still they have interacted through the force. Nuclear forces से interact किया इन्होंने. अभी इनमें आपस में direct interaction कुछ भी नहीं हुआ. It means energy is being given to the other nucleus, and that nucleus become into they get into the excited state. So that is called inelastic. The scattering process दो different way में है, elastic and inelastic. Now we come to the next is, which is if A and B are same and reaction cause yet another nucleon to be ejected separately, then it is called knockout reaction. Can you give an example कि A और B यानी outgoing particle और incoming particle दोनों same है. X और Y different हो सकते हैं. They can be different, X and Y. But if they are same, then it is called knockout reaction. It removes certain more nucleon from the nucleus. तो nucleus तो change होगा ही होगा. तो कोई reaction याद है ऐसा जो इसमें हमारे पास इस तरह से होता है कि जो incoming particle है same है और outgoing भी same है, but it bring further more nucleon from the nucleus. Do you remember any particular nucleus? है कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसमें ऐसा कुछ होता हो? नहीं है. Yes or no? हाँ नहीं बोलोगे, ना नहीं बोलोगे तो पता कैसे चलेगा कि क्या है. बताओ. कोई भी रिएक्शन नहीं है सर. आपके सामने लिखता हूँ रिएक्शन, मे बी इफ यू रिमेम्बर. क्या रिएक्शन है ये? अगर ये 235 है, ये 1 है, तो टोटल 236 हो गए. तो
तो आपके पास एक Y एटम आएगा जिसमें से 236 माइनस 3 करूँ तो 233 आ जाएगा और 3 न्यूट्रॉन आपके एमिट होते हैं. हाँ, फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन. यूरेनियम 235 को जब आप न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करते हो तो पहले तो इसके अंदर एंटर करता है वो 236 का यूरेनियम बन जाता है बिकॉज Z इज नॉट चेंजिंग. हाँ, ये भी यूरेनियम ही होगा. दिस इज आल्सो यूरेनियम. Sir, you have not shared the screen. अच्छा अच्छा, एक सेकंड. ये neutron when bombarded to uranium 235 as a fission reaction. So you have 3 neutrons which is coming out and you are left with this one, or you can left with 2 more products. Normally हम 2 different products. हम सिर्फ ये example लेके चल रहे हैं कि it is initially emitting a 3 neutron and you are left with this one. This is obviously unstable. It will break into 2 parts. Normally हमारे पास fission reaction में it breaks into 2 parts. So just an example, a neutron is being bombarded and neutron is coming out, and further it is bringing 2 more neutrons. So this is a knockout reaction. It removes extra neutron from the nucleus, means from the target. टारगेट को उसने बम्बार्ड किया और खुद से तो बाहर आ ही गया और साथ में 2 और लेकर बाहर आया. So this is what the reaction is. So let me just share one more file to you. And okay, so this we have done. Now the sixth one, there is another classification, and if 1 or 2 nucleon are transferred between the projectile and the target. Sometime what happens, if you have, say, if you bombard a helium, or let me just use not helium, let us use deuterium. So deuteron we are using, and when the deuteron means H211, it hits a certain nucleus which A, Z, and N, and it can transfer, means 1 or 2 nucleon are transferred between the projectile. So both the things can happen. अब 2 न्यूट्रॉन मींस 2 या एक या 1 or 2 nucleon can be transferred from the projectile to the nucleus or from the nucleus to the projectile. So both can happen. So sometimes these 2 things happens. Projectile भी अपने nucleus दे सकता है nucleus को जिसको hit कर रहा है, or sometimes a nucleus could also give extra nucleon to the projectile. So for example, if it is hitting and you get a reaction in which outgoing is hydrogen, means one of the neutron has been transferred to this one. It means ये हो गया A plus 1 हो गया, Z Z है और N plus 1 हो गया. Means a neutron has been transferred to this one, and sometimes it happens that HH, which is hitting a nucleus which having A, Z, and N, then your outgoing particle is H2. Means what happens? It took 1 neutron from this target. So A minus 1 हो गया और Z Z है और N minus 1 हो गया. एक न्यूट्रॉन को ये लेके चला. So both are something like when the nucleon is being exchanged between the projectile and the nucleus. तो nucleus और projectile के बीच यानी target nucleus and projectile दोनों के बीच में आपके पास nucleon का exchange हुआ है. So this is called as transfer reaction. Okay, this is called as transfer reaction. So we will discuss in more detail. The surface classification, but in more detail we will have the example also for these different cases. Now the first which we have discussed is on the basis of reactant and product. अच्छा ये मैं क्या ना बोल दिया कि जो हमने classification अभी किया ना, what kind of reactant we are having and what kind of product we are getting. So based on that we have done the classification. Now we are doing the classification based on the mechanism.
how the things is happening. ये 3 different classification में हम इसको classify कर सकते हैं. One is called as direct nuclear reaction. First one is direct nuclear reaction. We will discuss in detail these 3 things. तो हम इसको तीनों को one by one डिटेल में डिस्कस करेंगे. ये है क्या? Knockout reaction, transfer reaction, they come into this category. They come into this category. So nuclear means direct nuclear reaction. Second reason is compound nucleus. They are the single name, compound hyphen nucleus. कुछ बुक में या कुछ कई जगह पे ऐसा भी कई बार कर देते हैं, हाइफन लगाना भूल जाते हैं, तो वहां लिख देते हैं कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शन. सो दैट इज नॉट द थिंग. हाइफन शुड बी देयर. दिस इज अ सिंगल वर्ड, कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शन और मैकेनिज्म. रिएक्शन भी नहीं कहते इसको, नॉर्मली मैकेनिज्म कहते हैं. So we'll discuss in detail why it is called as compound nucleus mechanism or reaction. Then the third one is resonance nuclear reaction. The uranium which we have discussed is something which will come into resonance nuclear reaction. Means a neutron could go into the uranium if the level is available. Means what is the energy of the neutron? What is the kinetic energy of the neutron? That energy should match with the different levels of the uranium-235. If it matches, then there is a good chance that neutron could get embedded in the nucleus. और अगर वो match नहीं सही से हो रहा है, तो then it is not going to go into the nucleus. So that is something which is concerned with the resonance. If resonance means the energy matches, means energy of the nucleus, different excited states, and energy of incoming particle. If they matches, then the reaction is likely to happen. If they don't match, the reaction is not likely to happen. So this is comes under the resonance reaction. तो तीनों को हम discuss करेंगे in detail. This is just a name that you can classify based on the mechanism. Now on the basis of energy. Energy means energy normally we call it for the projectile. क्योंकि हमने क्या assume किया, x हमारा rest में है. तो x अगर rest में है, तो उसके पास कोई रेस्ट मास एनर्जी के अलावा कोई दूसरी एनर्जी नहीं है. देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी. सो दिस इज एक्चुअली कंसर्न्ड विद द काइनेटिक एनर्जी काइंड ऑफ थिंग एंड द प्रोजेक्टाइल एनर्जी. एक्चुअली इफ इट इज of the order of 10 mega electron volt or less than per nucleon, जो इनकमिंग पार्टिकल है उसके पास एनर्जी ऑर्डर ये है, एन पर न्यूक्लियन. मींस अगर एक प्रोटॉन है तो उसके पास पूरे प्रोटॉन के पास एनर्जी. अगर आपके पास हीलियम है तो हीलियम में it will be divided, means around 40 mega electron volt of helium will come into this class. दिखने में मिलेगा कि 40 है उसके पास, but 40 अगर चारों पे डिवाइड कर दो तो it will come out to be 10. So this is per nucleon. So they are called as low energy reaction. They are not going to do a much change in the X or means target. They are not going to do much change. They can do the scattering process only. तो वो इलास्टिक हो सकता है, थोड़ा बहुत आपका इलास्टिक हो सकता है. Then we have 100 to 1 giga. ये 40 से ऊपर भी जा सकता है, up to 100 का नेक यहाँ पे गायब है, but up to 100 it can do. If it is more than 100 or 1 giga per nucleon, this is the rest mass energy of a proton or a neutron. तो हम उसके रेस्ट मास एनर्जी के आसपास पहुंच गए. It means a proton could vanish, a proton could be generated. This is what the energy says. इस स्केल में एनर्जी आप प्रोटॉन जनरेट भी कर सकते हो और प्रोटॉन को आप डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, ब्रेक भी कर सकते हो. Okay, if you are in this range, this is called as mid energy range. There could be some change in the arrangement of the nucleus that could happen. ये हमारे इस केसेस में आ जाते हैं. Then the third case, which is more than 10 giga electron volt. Again, there is a neck of 10 giga electron volt. 1 से लेकर 10, वो भी आप इसी में क्लासिफाई कर सकते हो. Okay, now if 10 giga per nucleon, that is the rest mass roughly of a quark. ये बहुत ज्यादा हो गया, 10 times of a proton. So that is very large value. So if that is there, then it is high energy, and normally this is concerned with the पार्टिकल फिजिक्स. पार्टिकल फिजिक्स में एनर्जी इससे भी ज्यादा होती है. तो पार्टिकल फिजिक्स हमारा हाई एनर्जी पे वर्क करता है. नॉर्मल जो आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं इन दोनों एनर्जी पे वर्क करते हैं. और ज्यादातर जो हम केस डिस्कस करेंगे वी विल फोकस ऑन दिस ओनली. वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दीस टू थिंग्स. वो हमारे आउट ऑफ
बाउंड है। तो हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे, हम जो डिस्कस करेंगे लो एनर्जी रिएक्शन, जिसमें बहुत कुछ मतलब all the conservation law, basic conservation law is going to follow. Okay, now we come to the observables, means what you observe once you do the reaction in a nuclear reaction, means what the things you can measure. You can measure or do the things you can observe. So first one is the energy of the outgoing particle. आप TB निकाल सकते हो, kinetic energy. अब उसका वेरिएशन हाउ इट इज वेराइंग विद एंगुलर और मींस बोथ द एंगल मींस फाई एंड थीटा बोथ इट मींस समथिंग लाइक अ सॉलिड एंगल. तो किसी रिएक्शन, अगर रिएक्शन एरिया आपका ये है, तो इस कोन में आपके पास हाउ मेनी पार्टिकल्स बी पार्टिकल यू आर गेटिंग इन दिस कोन, हाउ मच बी पार्टिकल यू आर गेटिंग इन दिस कोन, हाउ मच बी पार्टिकल यू आर गोइंग टू गेट. आपके डायरेक्ट बीम अगर ये डायरेक्शन है डायरेक्ट बीम का, तो इस डायरेक्शन में कितने आपको पार्टिकल मिल रहे हैं, इसमें कितने मिल रहे हैं. यू कैन हैव अ कोन एट दिस पॉइंट आल्सो. सो दिस इज समथिंग व्हिच यू आर मेजरिंग डी सिग्मा बाय डी ओमेगा. अगेन दिस नेम इज डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन. कई बार आया है और इस चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे कि ये है क्या और इसका इक्वेशन क्या होता है. इट इज इक्वल टू व्हाट, दैट वी विल डिस्कस इन दिस सेक्शन ओनली. ये असली में है क्या, ये बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं डी सिग्मा बाय डी ओमेगा, डी सिग्मा बाय डी, but what is this number is and it is equal to what. So in this you will discuss what is this, what is this equation is. Then you can measure the polarization of outgoing particle. अगर आपका electromagnetic wave है, even polarization is not only concerned with the electromagnetic wave but spin. outgoing particle का spin क्या है, अगर half है तो up में है या down में, तो you can use magnetic field and to measure the spin also, that you can easily do. Fourth one is gamma ray and the electron conversion. If you have a gamma ray reaction, means अगर आप photoelectric effect पढ़ रहे हो यानी photo nuclear reaction पढ़ रहे हो या आप radiative capture पढ़ रहे हो, then you require to know what is the gamma ray. अगर आपका nucleus एक gaseous state में चला जाता है तो it can emit a gamma ray also, or it can do electron conversion also. So you can measure these two things also after doing the reaction. तो reaction होने के बाद आपके nucleus normally जो Y है, it will be in the excited state and that will relax back by emitting gamma or an electron, and you can study its other property also. So these are the four different things that you observe when you do a nuclear reaction. उसके respect में you determine the value of other characteristic of the Y nucleus also. तो यहाँ तक हम ये खत्म करते हैं. उसके बाद हमारे पास स्टार्ट होगा conservation law which is to be followed, and we will do these laws and in detail. Now we will have the derivation for the center of mass frame and lab frame. ये दोनों derivation एक मतलब एक क्लास को लग ही जाएगा, मे भी 2 क्लास भी लग जाए, तो वो हमारा मंडे फिनिश हो जाएगा. What is the conservation law and what are the equations? So that we will finish and then we will go to the direct compound and means next week या उसके एक और वीक लेकर के ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा. तो सितंबर में we will finish off one more topic. Okay, so now you can join the tutorial class and we will discuss the tutorial questions. तो ये मैं मीटिंग अभी एंड कर रहा हूँ, कुछ टाइम हो गया है, तो जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग.